Hello everyone and welcome to RUPINDER'S online classes and courses. My name is Rupinder Kaur Pullar and here is my qualification in front of you और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर्स इन इंग्लिश का बहुत इम्पॉर्टेंट और a little complex topic. So मेरी previous video फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बनी हुई है. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं टू लिंक अप इट विद दिस वीडियो. सो उस वीडियो में लिटरेचर क्या है एंड व्हाट इज द लिटरेरी मूवमेंट एक इंट्रोडक्शन दी गई है इसमें विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द कमेंट्स दैट आई हैव गॉट ऑन दैट वीडियो. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर 1 that is literary movements उसका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक जो एक बड़ा ही रिगरस कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिसको फर्स्ट गो में पढ़ के कोई बच्चा भी इजीली समझ नहीं पाता. सो आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश. So this is the topic we are going to deal today. That's an essay written by Francois Jost. What is literary movement as per the new syllabus of Masters in English? So this is exactly the topic, the challenges of literary movements. So that is the title of the essay, and in this essay we are going to deal with what the literary movement is and different aspects related to a literary movement. So without any more delay, let's jump into the topic and start studying what is there in this essay. So the writer is Francois Jost and the title of the essay is The Challenges of Literary Movements. So this is paper 1 unit 1. The title of the paper is Literary Movement. Movements. So what is a literary movement? The essay begins with that it is an act or a process by which literature moves. So literary movement एक ऐसा act और एक ऐसा process है जिससे literature move करता है, and when literature moves, it grows and progresses as a whole body. When literature moves, it moves as a whole body, not as fragments. तो parts में नहीं आगे जाएगा, पूरे का पूरा literature move होगा. So it is the context of literary works that is important to understand a work. कोई भी work हमें understand करना है उसके लिए बहुत important है कि हम context का ध्यान जरूर रखें, किन हालातों में वो work create किया गया है. So the important points that are mentioned in the essay, it's like nothing is created in a vacuum. Every text corresponds to its social, political, economic, aesthetics, philosophical, geographical, historical, psychological circumstances and conditions or surroundings in which it takes birth. So nothing is created in vacuum. Everything corresponds to something. And in this context, literary movement has been described as an era, an age, an epoch, a period that, and it can also be called a trend, a school, a circle, or coterie or coteries, which means set of same like-minded, a group of like-minded people. So literary movement is an era, it's an age, it can be known as, it can be you can say associated with the pseudo terms like trend, school, circle or coterie as well. And it is really difficult to limitize a literary movement within a period of time or a genre. तो आप किसी भी literary movement को किसी एक period या genre में बांध के नहीं रख सकते. Because I am teaching the master's students, so I think, I hope you are understanding English and there is hardly any requirement to explain the stuff in Hindi. So यहाँ सबसे पहले बात हो रही है literary movement कैसे पैदा होती है. Literary movement या एक movement, when does it takes place? So a movement takes place when authors start competing with their peer groups. Peer groups होते हैं वही like-minded groups. तो जब
ऑथर्स अपने ही बैचमेट्स के साथ, अपने ही कंटेम्प्रेरीज के साथ compete करने लग जाते हैं, तब एक लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। एक ट्रेंड है जो सारे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट। जब कोई अलग लिखना, अलग स्टाइल फॉलो करना शुरू करता है, अलग तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू करता है, देन अ न्यू मूवमेंट टेक्स प्लेस। बट वो मूवमेंट तब तक नहीं बनेगी जब तक इट इज नॉट फॉलोड बाय मेजॉरिटी। सो इट विल ओनली बी अ मूव। अगर 2 बंदों ने, 4 बंदों ने अलग लिखा, जैसे पिछली वीडियो भी मैंने बताया था, एक थॉट है, उसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट आता है और उसके बाद मूवमेंट आती है। जब जन सैलाब आता है, जब मेजॉरिटी, एक ऐसा ट्रेंड आता है जो जैसे कोविड है, पूरी दुनिया में फैल गया, तो कोविड की एक मूवमेंट चल गई, हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऐसे हैज इट्स फोकस ऑन 3 फैक्टर्स। तो क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जहाँ इस ऐसे में डिस्कस होने वाली हैं। फर्स्ट की लिटरेरी मूवमेंट्स का नेचर क्या है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, बट अगर मुझे लग रहा है आई नीड टू कनेक्ट विद यू, आपको एक बार समझाने के लिए मुझे हिंदी का सहारा अगर लेना पड़े, डेफिनेटली आई वुड डू इट। बट बीइंग मास्टर स्टूडेंट्स, फील encouraged, read as much as you can read in English and listen to English stuff, and to try to speak in English as well, because it will give you confidence as well as your expression will get improved. So firstly, लिटरेरी मूवमेंट्स का नेचर क्या है। सेकेंड जो पॉइंट एस्पेक्ट इस ऐसे में डिस्कस हो रहा है वो है रोल ऑफ एस्थेटिक्स और स्टाइलिस्टिक्स। लिटरेरी हिस्ट्री में एस्थेटिक्स का और स्टाइलिस्टिक्स का क्या रोल रहा है, और लिटरेचर में अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, एस्थेटिक्स को और स्टाइलिस्टिक्स को, एस्थेटिक्स हो गई ऑल द एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स रिलेटेड टू ब्यूटी ऑफ द वर्क, और स्टाइलिस्टिक्स हो गए स्टाइल, स्ट्रक्चर क्या है उसका, फॉर्म, उसका आउटवर्ड लुक कैसी है। सो अगर हम इनको अलग कर दें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे उसके, उनके साथ हम, ये पॉइंट हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इस ऐसे का मेन फोकस है, इनके ऊपर ये डील हमने इनको स्टडी करना है। और पूरा ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन दोज अकॉर्डिंग टू दोज पार्ट्स ओनली। Then there is a reference of history, that history teaches us that before one philosophy reaches its maturity, the new takes birth. अभी एक literary movement completion पे पहुंची नहीं होती कि नई literary movement की नींव रखी जाती है। philosophy की बात हो रही है यहाँ पे, so literary movements कहीं ना कहीं they are related with the philosophy, and what philosophy is? Philosophy is the basic view of life and interpretation of life. And there are hundreds of moves in the history of literature, but only a few have been called movements because they have stayed for a considerable period of time. तो आज अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, दिस इज वेरी सिमिलर टू क्लाइमेट एंड वेदर। जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होती हैं हम उनको वेदर बोलते हैं, तो दे आर मूव्स, और जो लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट, तो वो हमारी क्लाइमेट इज इक्वलेंट टू अ लिटरेरी मूवमेंट। तो काफ़ी सारी मूव्स हुए हैं हिस्ट्री में, बट ओनली अ फ्यू हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म। और अगर ये जानना है कि ये क्या है, आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें इनको सिंपली एक्सप्लेन किया गया है। So, इसके बाद बात आती है क्लासिसिज्म की। क्लासिसिज्म was concerned with the form and content. Greeks, the ancient or classical works are based on the theory of imitation or mimesis, जिसका मतलब है to copy. तो प्लेटो की theory है that states that literature is the third copy of the ideal state. और इसमें ये क्या कह रहे हैं, there is one world of ideas which is considered as the perfect one, then the second is its copy, the physical world, and whatever the artists are creating in literature, that is twice removed from the reality, from the ideal state. तो अगर यहाँ पे ये आप पेपर 2 यूनिट 1 जो ओरिएंटेशन है एम.एच. अब्राहम्स का, वहाँ भी ये सेम पॉइंट टच होगा। तो प्लेटो के अकॉर्डिंगली एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है,
आइडियाज़ हैं, फिजिकल वर्ल्ड आ गई और लिटरेचर आ गया। या अगर आप सोक्रेट्स की एग्जांपल देख लो बेड की, तो एक आइडिया ऑफ बेड फर्स्ट, उसके बाद एक कारपेंटर का बेड, फिजिकल फॉर्म आ गई सेकंड, और अगर वही बेड एक पेंटर पेंट कर दे तो दैट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ द बेड। तो जो रियल है वो आइडियाज़ हैं, उनको ही प्लेटो और सोक्रेट्स ने रियल माना है। तो यहाँ लिटरेचर को वो कह रहे हैं कि दैट इज ट्वाइस रिमूव, तो थर्ड कॉपी आ गई आइडियल स्टेट की। फिर सोफोक्लिस की बात हो रही है यहाँ पे। ही इज़ द राइटर ऑफ एडिपस रेक्स, उसके प्लेज हैं, चाहे होमर की पोएम्स हैं, दे आर नॉट मियर टेक्स्ट। तो अगर क्लासिकल टेक्स्ट क्रिएट हुई हैं वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, दे आर द रियल रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द ऑथर्स, विच मीन्स द कॉन्टेक्स्ट। तो कोई भी वर्क लिखा जाता है, वो वर्क अपना टाइम दिखाता है, अपनी ज्योग्राफी, फिलोसफी, सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, सब कुछ दिखाता है। तो अगर होमर ने कोई पोएम लिखी है तो दैट इज नॉट जस्ट अ पोएम, दैट इज द हिस्ट्री around him and the circumstances of those times. And then again, classicism, it cannot be limited within a set frame of work. It is a recurring event. जैसे एक ट्रेंड है, एक स्टाइल है, एक फैशन है जो कुछ सालों के बाद रिपीट होता है, वैसे ही क्लासिसिज्म भी रिपीट होता रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीक्स के टाइम पे ही क्लासिसिज्म था। इट can be seen later on as well. For example, 17th century France experienced it with Corneille and Racine. Germany experienced classicism in the 18th century with Goethe. So ऐसे ही classicism को आप एक period में, एक genre में या एक century में बांध के नहीं रख सकते. It is a recurring phenomena जो बार बार आता है. फिर क्लासिसिज्म की बात हो रही है. क्लासिसिज्म इज ऑल अबाउट थॉट एंड फॉर्म. थॉट में क्या आता है? आइडिया और इमोशन, और फॉर्म में आता है उसका स्ट्रक्चर या उसका स्टाइल. दिस इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, और अगर ये समझ लिया आपने, योर एसे इज क्लियर, देन यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर ऑन वॉट एवर आस्पेक्ट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर. सो एट टाइम्स फॉर्म इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन द थॉट. कि थॉट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना होके कई बार फॉर्म को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिल जाता है. सो दैट्स हाउ थिंग्स गेट चेंज्ड. अगर थॉट पे ज़्यादा फोकस है तो वो क्लासिसिज्म की तरफ जाएगा, और अगर स्टाइल पे चला गया तो वो रोमांटिसिज्म की तरफ जा सकता है, वो मिटीरियलिज्म की तरफ जा सकता है. फिर रेनेसां की बात हो रही है यहाँ पे. रेनेसां क्या है? रेनेसांस इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई अब. So that is rebirth or revival of learning. That's a movement that imparted new orientation and new meaning to human existence. फिर ऐसे में बात हो रही है baroque की. Now what is baroque? That is a style half pearls. Pearls की वर्ल्ड से ये शुरू हुआ था. Half pearls जो हैं they are called like baroque is associated with pearls, structure of pearls. Pearls में से ये आर्किटेक्चर में गया, जो गोल गुंबद वाली बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, और वहां से इट केम इनटू लिटरेचर. नाउ इन सिंपल वर्ड्स, baroque style means over decorated and elaborated style and form. So some movements they quickly change into the other trends like romanticism. romanticism एकदम से realism में convert हुआ, realism में के बाद materialism, और इसके बाद socialism. और romanticism जो है ये किस philosophy से deal करता है? It is related to a philosophy जो बेसिक इंटरप्रिटेशन है एग्जिस्टेंस का. तो अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज अ क्वेस्ट फॉर द सेल्फ. रोमांटिसिज्म का मतलब है अपनी खोज करना, अपने मन की बात करना. जैसे एम.एच. अब्राहम्स कहते हैं कि रोमांटिसिज्म जब आया तो एक आर्टिस्ट एक मिरर ना होके एक लैम्प हो गया. उसने अपनी इंटरनल फीलिंग के साथ वर्ल्ड को इल्यूमिनेट किया. So that is a victory of the individual over the collective. तो romanticism क्या है? It is self versus society. Quest for self, अपने आप को ढूंढना. Whereas socialism का मतलब क्या है? Self and society. That society is protective and self is only secure when self is in the society. So in यहाँ पे romanticism और socialism का difference, सेल्फ वर्सेस सोसाइटी. सोशलिज्म में सेल्फ
and society, self in society. So इसके बाद दोबारा से end हो रहा है इस particular discussion का with simple words that life जो है that is a movement. Then this was the first part. Second part जो है ऐसे का उसमें बात हो रही है that literary movement is a study, is not a study of dilemmas. Indecisiveness के बारे में नहीं है ये. Movement जो है it's about priority, और जिसको priority मिलती है उसी हिसाब से movement change हो जाती है. तो लिटरेचर में प्राइम चीज़ क्या है, प्रायोरिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज़ द थॉट और द इमोशंस. सो आइदर द थॉट शुड बी, अगर थॉट की बात हो रही है तो आपका जो थॉट है वो बहुत इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल होना चाहिए, और अगर स्टाइल है तो स्टाइल कहीं ना कहीं सेल्फ प्रिजर्विंग और सेल्फ सस्टेनिंग हो. अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली यू नॉट यू द मूवमेंट इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, अदरवाइज नहीं. सो व्हाई डज एनीथिंग गेट एक्सटिंक्ट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म कैसे हो जाती है, क्यों होती है, ओनली बिकॉज इट फेल्स टू इंस्पायर. जो चीज़ इंस्पायर नहीं कर रही, जो चीज़ कनेक्ट नहीं कर रही, जो चीज़ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं जा रही, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग. So it fails to inspire, to connect, and if a trend is not carried forward from one generation to another, definitely things are going to get extinct. According to the author, God and the poet are the creators. तो कहीं ना कहीं जॉस्ट के भी व्यूज जो हैं वो अरिस्टोटल वाले हैं कि गॉड और पोएट दोनों ही क्रिएटर हैं. They create something out of nothing. But even the poet needs an idea, motion or an emotion to create a poem. तो क्रिएट करने के लिए तो अब हम कह रहे हैं कि दे आर क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग, बट दिस नथिंग डज नॉट लिटरली मीन नथिंग. नथिंग का मतलब यहाँ एटलीस्ट कोई आइडिया तो चाहिए कोई पोम क्रिएट करने के लिए उसे. सो जब ये क्रिएट हो गया, सबसे पहले आपको इमोशन चाहिए, थॉट या इमोशन. इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या आता है, देन कम्स द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर एट द सेकेंड पोजीशन. The style adds beauty to the literary creation and makes the content more enduring. Now, this is what is very important to understand in the essay. Literary movements are all about priorities. Priorities are either given to the thoughts or to the emotions. Thought पे ज़्यादा concentration है तो classicism है, neo-classicism है, और अगर emotions की तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं medievalism, renaissance, romanticism ये चीज़ें आ जाएंगी. और सेकेंड पोजीशन जो है वो जाती है स्टाइल और स्ट्रक्चर को. इसके बाद प्रेच यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ही एक्सप्लेन्स अ स्टाइल विद स्टोरी. तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी बताई जा रही है ऐसे में. Once his character Mr. Cuner asked his gardener to create a globe with laurel. तो एक लॉरेल ट्री है और गार्डनर को बोला गया है, दिस इज द एग्जाम्पल हाउ ही हैज डिफाइंड whether style is important or not. तो कहते कि ग्लोब बना दो इस लॉरेल का. The gardener did it wonderfully, but Mr. Cuner, he said that he could see the globe, but where was the laurel? Which means कि उसने वो ग्लोब तो बना दिया, इतना ब्यूटीफुल बनाया कि कहीं ना कहीं इतना ब्यूटीफुल कि ट्री वाली फीलिंग ही नहीं रही उसमें. ट्री था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गोल बॉल दिख रही थी उसकी. इट वॉज डन सो ब्यूटिफुली. तो दैट इज द सुपर एडिशन ऑफ स्टाइल. सो स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट बट ओवरडोज इज श्योरली नॉट. तो अगर आपने ये फील ही नहीं रहने दिया कि वो पत्तों से बना हुआ है तो दैट्स गोइंग टू स्पॉइल एवरीथिंग. सो द पोएट नीड्स टू डिलीवर अ मैसेज थ्रू हिज पोएम्स, otherwise he is a sounding brass or an empty vessel. So this is something important regarding the style, and a poet needs to deliver some message. If he fails, his poetry is going to get extinct. Now the third part of the essay deals with naturalism. That means extreme realism. Then there is mention of two naturalists, two French naturalists, Buffon and Bernardin, who said that style is man's mind and heart. They said that no work passes the test of time if it does not have prominent thought or formal beauty.
So they are the ones who have given importance to the prominent thought कि अगर आपने अच्छे समय के लिए रहना है, you need to have a good thought in your writing, and you cannot do it without thought or the style. So the blend of content and form produce great works. So this content is thought or emotion, and the form is again your structure and style. तो इन दोनों का combination जो है, that's going to make the works great. And quoting Horace, Bernardin says that words come naturally out of the subject matter. तो words की जहाँ तक बात आती है, words जो हैं, they naturally come out of the subject matter. For example, when you talk of COVID-19, we start talking of masks, social distancing, oxygen cylinders, ventilators, then breathlessness, nausea, fever, so many things. So these two French men, Bernardin and Buffon, they influenced the world of prose, but their influence can be felt in the field of poetry. So this is not the word, this is world. So prose की दुनिया में उन्होंने influence किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो style था, that was quite, their influence can be felt in poetry, field of poetry as well. Now R.W. Emerson, he says that it is not the meter or style that is more important, but the meter making argument or the thought which is more important. So different authors have different views. R.W. Emerson, he's an American poet, he has emphasized that thought is more important instead of the style. On the level of significance, thought and form are on equal status. So you cannot bargain one at the cost of other. Thought और form दोनों ही बहुत important है. On the level of significance, importance के level पे दोनों ही important है. But on the ground of birth, it is the thought that comes first. तो अगर हम बात करें जेनेसिस की, बात करें इंसेप्शन की, बात करें ओरिजिन की या बर्थ की, तो पहले क्या आता है? स्टाइल. बाद में आता है, पहले आता है थॉट. सो सबसे बेसिक चीज किसी भी वर्क में जो है, दैट इज द थॉट. So then fourth part deals with each and every literary movement is different from the other as far as nature and function of a movement is concerned. So this variety is clearly evident in the isms. So we have so many isms. So I am not going to afraid you with the detail, whatever is written on the screen. You can just take a screenshot and read it on your own. So there are different references to symbolism, imagism, existentialism, realism, naturalism, etc. In addition to Dadaism, Surrealism. So these are different isms that are mentioned. These are the movements, and how one is different from the other is actually the matter of great concern. And I would urge all my viewers, all the students, to just go through all these terms once, because they are very important from UGC point of view as well. So these are the movements. I have made a quick reference to all these. Impressionism, this is a term used to describe a work of literature characterized by the selection of a few details to convey sense impressions. So expressionism, it deals with, it's a revolt against realism. It deals with psychological or spiritual reality. Then we have formalism. It deals with, you will read it in paper 2 criticism as well. So it deals with form, rules about arrangement of different elements and expressing feelings and meanings. Like not mainly concerned with expressing feelings or meanings, but with the form, rules of arrangement, different elements in a work. Then we have concretism. It deals with representation of abstract things as concrete. Then we have avant-gardism. That means innovation in style and breakdown of conventions. Then we have futurism, which means artistic and social movement that originated in Italy, and it emphasized speed, technology, youth, violence, and objects such as cars and aeroplanes and all. Then we have cubism. This is again
European painting and sculpture style, in which cubes were used to express something. Then we have absurdism. This is a philosophy, this is a movement in which total chaos and human inability to find any purpose in this purposeless, meaningless, and chaotic universe is described. Then the last and the fifth part of the essay, it deals with the life is study of changes. In this context, a literary period is an abstraction, whereas a literary movement is based on the facts and it reflects facts. So this is something important जो हमें दिमाग में रखना है. Literary period. A literary period is just an abstraction. If Shakespeare wrote, if he lived from 1564 to 1616, it does not mean that he started writing from the very beginning. तो कुछ time हुआ होगा. तो and he could do well in the field of drama. He excelled in. Then he also excelled in poetry. So literary period, a period in which some common sort of literature was created. It's an abstraction. जबकि literary movement, it is based on facts. तो जो हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं, everything is going to be fact based. Abstraction नहीं है. Literature is ever growing and evolving. It is static only when something is being written or read. तो literature moving है, evolving है, growing है, static है. कब तक है? जब तक एक नया work of art लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है. As soon as the writing is done, there is some new book that is being added into the literature. As soon as some reading is done, something new as a new interpretation is being added into the criticism. So literature grows and there are new editions in the body of the literature with every new writing and reading. The term literary should not be used in the limited sense, rather it is an umbrella term that is associated with a number of aspects of human life, men and mannerism. If the thoughts and emotions have put the universe in motion, it is the style and form that has made the cultural aesthetics valuable. So thought or emotion, style and form, these are something, some very important terms, important aspects that cannot be ignored. So the biggest challenge involved in the study of movements is the challenge of comparison as well as the binding aspects. So the biggest challenge in the study of literary movements, first thing that you have to keep in mind, literary movements are based on facts. There are no abstractions. And then the main challenges of comparison as well as of finding the binding aspects, similarities and dissimilarities. So that is the biggest challenge that is being faced as far as the study of literary movements is concerned. The entire essay can be summed up with these two lines, just two lines. The two underlying literary elements in each and every movement is what is wrong here. When we are talking of two movements, so it would have been R. So the two underlying literary elements in each and every movement are content and form. So content means thought or emotion and form means structure and style. And this style is also important because it adds into the beauty of the literary work. It gives it aesthetic value. It gives it cultural significance. So that is really important, and that is all. I hope you must have understood what the entire summary or the gist of the essay, The Challenge of Literary Movement, is written, which is written by Francois Jost. And I hope you are clear with the things, and if you have liked the video, do not forget to comment. Do not make a mention of it in the comment section that how
did you like the video, and do you want me to make more videos on the other topics as well? So that is all for today, and if you're watching the video for the first time, do not forget to subscribe to the channel and do press the bell icon so that you're notified whenever I upload a video. And don't even forget to share it with your friends, with all those people who are appearing in exams in private mode, so that they might feel little encouraged to do well in their exams. And do let me know if you want me to make videos on other topics as well. Take care. See you soon with another interesting video. Hope you all are going to get benefited with these videos. So see you soon. Take care.